Now, what are the effects of force acting on an object? These are the questions which are given on page 1 of Science 1. Now, what are the effects of the force acting on an object? The force acting on an object causes the object to change its shape. Now, what is the meaning of changing its shape? Like for example, if I take duff, what is the meaning of duff? जो आटा होता है, गूंदा हुआ आटा रहता है, उसमें जोर से मारो. If you hit on the duff, what happens? The shape changes. So this shows that force can change the shape of an object, accelerate, decelerate, or change the direction of moving object. What is the meaning of that? Supposing if you are driving a car, अगर कार ड्राइव कर रहा है तो अगर अपना we have to increase the speed. What we will do? We will put the foot on the accelerator, so the speed will increase. If I want to decrease the speed of the car, then what I'll do? I'll apply force on the brake, so the speed will start decreasing, or change the direction. If I have to go to the left or right side, what I'll do? Change the apply force of the steering wheel, the direction will change of the moving object. तो अगर मुझे गाड़ी accelerate, decelerate और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अगर मुझे गाड़ी, समझो मैं गाड़ी चला रही हूँ और मुझे उसका स्पीड बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं फोर्स अप्लाई करूँगी एक्सेलरेटर में, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा. अगर मुझे स्पीड कम कराना होगा तो मैं ब्रेक में पैर दबाऊँगी, फोर्स अप्लाई करूँगी, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा. और अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना हो तो भी मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. फोर्स किस में अप्लाई करेगी? मैं स्टीयरिंग व्हील में. जब मैं स्टीयरिंग व्हील में अप्लाई फोर्स करेगी तो इट विल मूव. जो गाड़ी जो रहता है या तो लेफ़्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा, जिस तरफ स्टीयरिंग व्हील मूव करता है. और move a stationary object. इसका मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने बुक रखा है टेबल के ऊपर, वो बुक वैसे ही रहेगा जब तक मैं उसमें फोर्स नहीं अप्लाई करेगा. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर पाऊंगी जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगी, या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर पाऊंगी can be stopped by applying force. So by applying force I can stop a moving. अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसा बॉल जा रहा है, मूव हो रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो मैं उसको स्टॉप कर सकती हूँ अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया. So these are the effects of the force acting on an object. Now what are the different types of force? The different types of force which I have studied is frictional force, electrostatic force, which I have already studied last year, gravitational force, mechanical force, electric force, etc. So these are the different forces which I have already studied. Now this lesson is about gravitation. So what do you know about the gravitational force? The force which is applied by the earth on an object, on any object, and pulls the object, so pulls it towards itself.
So all the object moves towards the center of the earth or the gravitational pull, that is why towards itself is known as gravitational force. We had studied this when the Newton was sitting under the tree. The apple comes and falls down. So why it comes and falls down? It is because of the gravitational force. It pulls the apple towards itself. Now Science 1, Lesson 1, Gravitation. We had studied last year that there is always a force of attraction between any two objects on the earth, as well as there is force of attraction not only on the objects on the earth but also between the objects in the universe. तो पिछले साल अपन ने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो अर्थ में रहता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और ये ज़रूरी नहीं कि ऑन दी अर्थ ही रहना चाहिए, यूनिवर्स के अंदर भी एनी टू ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मून, बिटवीन मून and the earth. So there is a force of attraction between moon and the earth in the universe, or between the planets and the sun. The phenomena of gravitation was discovered by whom? Isaac Newton. तो gravitation, phenomena of gravitation किसने ढूंढा था? Isaac Newton. Now we know that when Newton sat under a tree, he found that the apple fell directly or vertically downwards. He wondered that why the apple fell directly downwards, why it fell vertically downwards, not it fell in a angle, and why it fell only vertically downwards. तो आप उनको पता है कि न्यूटन जब भी झाड़ के नीचे बैठा था तो उसने देखा कि एप्पल जो रहता है वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आके गिरता है, तो वो सोचता है कि एप्पल क्यों सीधा आके गिरता है, क्यों टेढ़ा नहीं गिरा, तो इससे उसको पता चला. सो फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विच मेक्स द एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड नॉट एट एनी एंगल. तो इससे उसने कंक्लूजन लिया कि अर्थ के सेंटर से कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एप्पल को सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड गिराता है और कोई एंगल में नहीं गिराता है. सो द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में आता है, इसके लिए वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर पोजिशन, टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, from the position of the apple to the surface of the earth. Now there is a force of attraction between apple and the earth. So is there a force of attraction between the earth and an object which is at a greater height like the moon? Yes, there is a force of attraction to an object which is at a greater height compared to that of the apple. तो न्यूटन ने सोचा कि जैसा एप्पल को अट्रैक्ट करता है अर्थ, ये एप्पल तो बहुत नज़दीक है अर्थ से, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ऊपर है उसको भी अट्रैक्ट करता है क्या, जैसे कि मून है, तो मून को भी अर्थ अट्रैक्ट करता है नीचे, तो इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. व्हाई इट डज नॉट फॉल, वी विल बी स्टडिंग दैट आफ्टरवर्ड. नाउ फोर्स इज नेसेसरी, फोर्स जो रहता है इट नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैं अगर कार चला रही हूँ, इफ़ आई एम ड्राइविंग अ कार, तो फोर्स जो रहता है इज़ नेसेसरी, स्पीड चेंज करने के लिए भी नेसेसरी है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी नेसेसरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम ड्राइविंग अ कार, आई वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, सो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द एक्सेलरेटर. इफ आई वांट टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, देन आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द ब्रेक. इफ आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार, देन आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द एक्सल ऑफ द कार. सो सेम फोर्स जो रहता है वो स्पीड भी चेंज करने को ज़रूरी है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन को भी चेंज करना फोर्स ज़रूरी है. जैसा कि अगर मैं कार चला रही हूँ और उसका स्पीड मुझे इंक्रीज़ करना है तो मुझे एक्सीलरेटर पर फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर मुझे उसका स्पीड कम करना होगा तो मुझे ब्रेक के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करना होगा तो मुझे एक्सल के ऊपर उसका फोर्स लगाना पड़ेगा. सो फोर्स इज़ नेसेसरी इवन टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़ोर से फोर्स लगाऊँ तो उसका शेप चेंज हो जाता है. नाउ न्यूटन, हु इज़ न्यूटन? न्यूटन इज़ अ वन हु हैड फाउंड द लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, theory of gravity,
All this thing he had written in a book known as Principia. तो न्यूटन ने सिर्फ यही नहीं ढूंढा, बहुत सारा चीज़ ढूंढा, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थियोरी ऑफ ग्रेविटी, ये सब उसने एक किताब में लिखा है जिस किताब का नाम है प्रिंसिपिया. बिफोर न्यूटन रोट दिस बुक, अनदर साइंटिस्ट नोन एज केपलर, he had found the laws of planetary motion. तो न्यूटन जब ये बुक लिखने से पहले दूसरा एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था केपलर, जिसने ये लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन ढूंढा. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन. जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, केपलर जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स पोजिशन एट रेगुलर इंटरवल, ही कंक्लूडेड द 3 laws ऑफ मोशन, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट वाई द प्लैनेट्स वर ओबेइंग दिस लॉ. तो जो केपलर ने यही सब लॉज पहले ढूंढा था, वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करके, प्लैनेट्स को ऑब्ज़र्व करके, उसका अलग अलग पोजीशन ऑब्ज़र्व करके उसने ये लॉज ऑफ मोशन ढूंढा था, मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों प्लैनेट्स ये रूल ऑब्ज़र्व कर रहा था. अभी जो आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन हैड नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस, ही हैड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ हीट, लाइट, साउंड, mathematics. In mathematics, he had found the branch of mathematics, that is calculus. Calculus was the one which he had invented it. He had also constructed the first reflecting telescope. तो न्यूटन ने फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी उसने कंस्ट्रक्ट किया था. प्लस उसने हीट, लाइट, सिर्फ इसके बारे में ही नहीं ढूंढा, न्यूटन ने हीट के बारे में, लाइट के बारे में, साउंड, मैथमेटिक्स, इस फील्ड में भी ढूंढा है. इन मैथमेटिक्स में क्या उसने ढूंढा था? कैलकुलस. तो उसने इन्वेंट किया था कैलकुलस, और फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी उसने कंस्ट्रक्ट किया था. Now in page number 1, they have asked a question, state the Newton's 3 law of motion which you have studied last year in 9th standard. Now what is Newton's first law of motion? An object remains at a state of rest or state of uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. Now what is the meaning of this? An object remains at a state of rest. Supposing if a ball is there, it's not moving. So in order to make this ball move, I have to apply some force. If I push the ball, then only the ball will start moving. Or in a state of uniform motion, supposing if this ball is moving now. Now in order to stop this ball from moving, I have to apply some force to it. Now it should be in uniform acceleration. What is the meaning of uniform motion? Uniform motion means what? The ball should move throughout the motion. The ball should have the same speed. It should not have in the beginning smaller speed and afterwards a greater speed. No, throughout the motion it should have the same speed. Then I can stop the ball by applying force to it. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर समझो अ बॉल एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब समझो एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि बॉल, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है मतलब ये मूव नहीं हो रहा है, तो इसको मूव करवाने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना है. जब मैं पुश करेगी तो बॉल मूव करने लगता है. और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, समझो ये बॉल अगर मूव हो रहा है तो, और यूनिफॉर्म मोशन में मूव हो रहा है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? उसका स्पीड थ्रू आउट सेम रहेगा. ऐसा नहीं कि शुरुआत में कम स्पीड, बाद में ज़्यादा, फिर कम, नहीं. थ्रू आउट द मोशन उसका सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, स्पीड उसका सेम रहेगा. तो ये बॉल को मुझे अगर स्टॉप करना होगा, अगर ये मूविंग बॉल को मुझे स्टॉप करना होगा तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बॉल रुकेगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स?
Unbalanced force means what? Supposing if a tug of war is going on, and this is the center of the rope. Some people are standing over here and some people are standing over here. If both are applying same force, the center will not move, it will remain in the same position. Why? Because both are applying balanced force. But if the force on one side is greater and the other side is less, then the center will move towards a greater force. Now the force on one side is more and the force on the other side is less, therefore it is said to be unbalanced force. जैसे टग ऑफ वॉर में है तो अनबैलेंस का मतलब क्या? समझो ये रोप का सेंटर है, थोड़े लोग इधर खड़े हैं, थोड़े लोग इधर खड़े, दोनों भी रस्सी को खींच रहे हैं और दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेंटर का रोप है वो मूव नहीं होगा, वो उधर ही रहेगा। तो दोनों तरफ सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। इसके लिए वो हिल नहीं रहा है। लेकिन अगर समझो एक साइड का फोर्स ज़्यादा है और दूसरा साइड का फोर्स कम है, तो ये जो ज़्यादा की तरफ मूव होएगा, तो ये एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम फोर्स है, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेगा तो ही कोई भी चीज़ अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसको चेंज कर पाता है। नाउ व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ? Rate of change of momentum is proportional to the applied force. Now what is the meaning of this? Momentum is denoted by the symbol P, which is equal to what? Mass into velocity. Now supposing if two persons are sitting on a swing, in one of the swing a thin person is sitting and in the other a fat person is sitting. Now if I apply force on both the swing, same force is applied on both the swing and in the same interval of time, then both the swing will start moving, but this will move a little bit more forward and faster, and this will move a little bit less forward and in less speed. Why? Because the person sitting over here is fat and the person sitting over here is thin. So the mass of the persons are different. That is why the momentum will also be different. Now momentum is what? Rate of change of momentum is what? Is equal to what? F into T. That means the force and the time. Since I am applying same force in same time interval, therefore rate of change of momentum for both of them will be same. Why it is same rate of change of momentum? Because it is equal to F into T, that is force into time. Same force, same time it is applied, therefore rate of change of momentum is same for both of them. So the rate of change of momentum is proportional to the applied force. If I apply more force to both of them, the momentum will be more. If I apply less force to both of them, the momentum will also be less. So proportional. What is the meaning of proportional? If one increases, the other one also increase, and if one decreases, the other one also decreases. Now the third one, Newton's third law of motion. Every action force has an equal and opposite reaction force acting simultaneously. तो कुछ भी, if we apply any force, there will be opposite, equal and opposite reaction force. For example, if I take a ball and if this is a ground, if I strike the ball on the ground, what happens? The ball will go and strike the ground and again and immediately it will come and bounce back. So it doesn't stay over there, it bounces back.
So whatever force is applied by the ball on the surface of the earth also apply the same force on the ball but in the opposite direction. Hence the ball will bounce and come back on the top. So every action force has an equal and opposite reaction force acting simultaneously. मतलब क्या है, अगर मैं समझो एक बॉल है, बॉल को मैं ज़मीन से ऐसा स्ट्राइक किया तो बॉल ज़मीन में टकरा के वापस ऊपर आता है. क्यों वापस ऊपर आता है? कि जो फोर्स उसने ज़मीन पे लगाया था वही सेम फोर्स बॉल के ऊपर भी लगता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आता है. और साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि अगर ये बॉल जाके ज़मीन पे टकराता है तो बहुत देर के बाद वो वापस बाउंस नहीं होता है, इमीडिएटली बाउंस होता है. तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? इमीडिएटली. तो इट बाउंसेस बैक इमीडिएटली. Now first law, the Newton's first law is also known as law of inertia. Now what is law of inertia? Thing wants to keep on doing what they are doing. तो लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? थिंग्स वांट्स टू कीप ऑन डूइंग, मतलब जो भी वो कर रहा है वो वैसे ही दे कंटिन्यू टू, they are already what they are already doing. So keeps on doing what they are already doing. What they are already doing. मतलब अगर समझो कुछ रेस्ट में, कोई स्टोन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर कोई चीज़ मूव होता है तो वो मूव होता ही रहेगा. इफ़ वी हैव टू overcome inertia, we have to apply an unbalanced force. What is the meaning of this? Supposing if the stone is at rest, then in order to move it, we have to apply an unbalanced force. If it is moving, then in order to stop it, we have to apply unbalanced force. So law of inertia is same like Newton's first law of motion. So the meaning of both of them is same. Now, what is the meaning of centripetal force? I'll just show you with this experiment. Supposing if the object is this bangle, and if I apply a force with the help of this pen, the bangle starts moving in a circular motion. The force applied by the pen is known as the centripetal force. The moment I release the centripetal force, what happens? The bangle starts moving in the forward direction or in a straight direction. It does not move in a circular motion the moment the centripetal force is applied. I'll show you once more. Applied, not released. The moment I release the centripetal force, what happens? The bangle will start moving in a straight direction. If I stop it over here, it will go this way. If I stop it over here, it will go this way. If I stop it over here, it will go this way. So the position at which the centripetal force is released, the bangle will move in that particular direction. That is always tangential. It is always tangential to the, you know now what is the meaning of tangential, you have studied in geometry. So it was moving in a circular motion because of the centripetal force. Supposing if I release the bangle over here, the bangle will go this way. If I release over here, the bangle will go this way. So the bangle is moving in a straight direction. It is because of the centripetal force that is forced to move in a circular motion. It is because of this centripetal force the planets move around the sun, and it is because of this centripetal force that the moon move around the earth. Now take a string and tie one end of the string in your finger and the other end to a stone, and rotate your finger. When you rotate the finger, what happens? The stone starts moving in a circular direction. Now when does this force or the stone stops rotating? The moment you release the string, the stone will move in a straight direction, this direction. That means
If supposing if the stone is here and you release the string, it will go in this direction, it will not go in a circular direction. If the stone is here and you release the string, it will go in this direction. So we are pulling over here, we are pulling the string towards the center of the circle, which is forcing the stone to move in a circular direction. And the moment you release the string, what happens? The stone does not go in a circular direction, it goes in a straight direction. So there must have been some force which forces the stone to move in a circular direction. The moment you release, what happens? The stone will fly off along a straight line which is tangent to the circle at the position of the stone when the string is released. Now, which force was forcing the stone to go in a circular direction? That force is known as centripetal force. Now, does the centripetal force exist between the moon and the earth? Yes, it does exist between the moon and the earth. It is because of this centripetal force the moon revolves around the earth, and it is because of this force the planet revolves around the sun. Now take a cone and cut the cone in a straight plane. When you cut the cone in a straight plane, you will get a circular curve in the cone. But when a cone is cut in an inclined plane, if you cut it in an inclined plane, an ellipse curve is obtained. Now in an ellipse there are two foci. This is the ellipse which is formed when it is cut in an inclined plane. So in an ellipse there are two foci. Like a circle has one center, an ellipse does not have one center, it has two. That is known as the focal point. An ellipse has two focal points. Now if you take any position, supposing if you consider an object at A or B or C, the distance between at point A between the two foci, when you add both the distance AF1 plus AF2 will always be equal to BF1 and plus BF2, similarly CF1 plus CF2. That means the sum of the distance between the two focal points from every point, take any point on the ellipse, from every point on the curve is always constant. That is AF1 will always be equal to AF1 plus AF2 will always be equal to BF1 plus BF2 will always be equal to CF1 plus CF2. Now Kepler's first law. What is the first law of Kepler? The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. So orbit of the planet is in which shape? Ellipse shape, and the sun is at one of the foci. We have studied before that in the ellipse there are two foci, so the sun has to be at one of the foci. Kepler's second law, the line joining the planet and the sun. The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. That means from A to B some time is taken. In the same time it covers C to D. In the same time it covers E to F. Then it sweeps equal area at equal interval of time. So it sweeps equal area at equal interval of time. That means area over here is equal to the area over here and is equal to the area of here. All the three areas are equal. Now Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. If t is a period of revolution, then the square of the period of revolution is directly proportional to the this cube of the mean distance, that is r cube. R is the distance between the planet from the sun. So t square of the period of revolution is directly proportional to the cube root of the distance between the planet and the sun. If you remove the proportional sign and put equal to sign, you will get some constant k upon into r cube. Bring this r cube over here. What you will get? T square upon r cube will always be constant, that is k.